Hey, Assalamu alaikum. So this video is about grouping the data itself. Data points को कैसे group करने टेबलो में. So this is of course something that we'll discuss in the class, but since some of you wanted a video, तो ये वीडियो आपके सामने मौजूद है. I'm going to use the same data set that I did. Superstore का data है मेरे पास, and it's a really simple concept. For instance, if I bring in region in my sheet, ये 2 3 4 region है मेरे पास. So normally आप चीजों को ऐसे ही देखना चाहोगे 4 regions. What if somebody says that they want to have a collective view, uh, in that they want the central and east to be together. How do you do that? It's very simple. You just आप सिर्फ दोनों को select करोगे, and what you can do is use this. We just zone this in group members में. ये आप पेपर क्लिप देख रहे हो, इसको क्लिक करो. There you go. Now if you see, इसने लेफ्ट के ऊपर रीजन को क्लब कर दिया. And of course you can always rename it, and you can call it whatever you want. C and E कर लेते हैं, तो C and E region. There you go. So now the advantage is कि आप कोई भी एनालिसिस करने जा रहे होगे तो ये C and E को आप यूज कर सकते हो. Suppose आप and I think it's always a great idea to create kind of group by folder करने, to create a folder of these groups. I'm going to create, sorry, I'm going to go right down here and say create folders, and I'm going to say groups, which of course are new dimensions. There you go. So this will help me understand कि क्या हो रहा है. तो मैं इसको यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ. No, I think this is the wrong one. मुझे जो चाहिए था ये नहीं था. Let me just bring the right one in, which is CNE. CNE है, सब कैटेगरी में वापस ले आता हूँ. इनफैक्ट सब कैटेगरी को मुझे ग्रुप करना ही नहीं चाहिए था. डिलीट दे. Right, so now you've got the CND region, the group that we made. और इसको अब आप एनालिसिस किसी भी तरीके से कर सकते हो. कुछ भी बनाना चाहे इसमें बनाया जा सकता है. इसमें just flip it over. There you go. Central and East combined have a profit of 131,229, so on and so forth. ये ग्रुप जो है ऑफ कोर्स आप किसी भी डायमेंशन के अंदर जहाँ तो सब कैटेगरी के अंदर भी कुछ चीजों को ग्रुप टुगेदर किया जा सकता है. For example, accessories and art and binders and envelopes, labels, paper, they seem to be the same thing. अगर इनका इकट्ठा आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो always club them together like this. Yeah. And of course you can rename it. एडिट ग्रुप में जा सकते हो आप. एडिट ग्रुप में जाके बकायदा कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ निकालना है या ऐड करना है, वो भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल somebody said told you तो भाई ये लेबल्स नहीं आने चाहिए इसमें. So you can always push these labels outside of the group, or if you want to get something with a storage आ सकता है, तो storage को आप पकड़ के यहाँ पर डाल सकते हो. So you can always change this if you want. And of course name इसका आप जरूर देख लें. You can call it miscellaneous accessories maybe. Miscellaneous accessories. There you go. ठीक है. तो अब ये miscellaneous accessories है, इसको आप यूज कर सकते हैं. Let me just send it to the groups folder. और अब आप कोई भी एनालिसिस करना चाहें तो कर सकते हैं जिसमें miscellaneous accessories का जिक्र होगा. फॉर एग्जाम्पल आप miscellaneous accessories और सेल्स के साथ अगर देखना चाह रहे हैं
Let's just make a tree map if you can. ये देख लिया आपने। What it's doing is कि ये जो group together dimension है, इसको भी दिखा रहा है against other chart. So you can of course make a stack chart. Can make a bar chart if you want. Whatever you want. किसी भी जगह पे including calculated fields. अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं as a combined factor, you can choose it. तो ये है फायदा grouping का. But remember that grouping is distinctly different, not distinctly, but it is nonetheless different from sets. Because sets को हम filters के अंदर use कर लेते हैं. इसको हम filters के अंदर use नहीं कर सकते. Let's suppose I say subcategories का है subcategories and sales. So अगर subcategories और sales का अगर मैं एक pattern बना रहा हूँ तो ये आपके सामने. And what if I try to build this group together? जो मेरे miscellaneous का, अगर मैं इसको filter के अंदर drop करता हूँ and if I say that I just want to sorry कर लेते हैं इसको, just want to select these. तो जाहिर है ये सिर्फ ये देकर तो आ रहा है, but it's not really pitting this against the rest of the categories. So it's a very subtle difference, but it is a difference nonetheless. So ideally speaking, what we should be using in the filters is a set. अगर आप set बनाएंगे तो it's going to pit this against the entire data. ये एक छोटा सा फर्क है. बहरहाल ये बहुत आसान है and I'm sure you're going to enjoy practicing these.